लाइट को पेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, पर दिवाली के इस सीज़न में आई वॉन्टेड टू कैप्चर दैट ग्लो, नॉट जस्ट वट आई सी बट वट आई फील। आज मैं ट्राई कर रही हूँ एक सिंपल दिया स्टैंड, लेकिन चैलेंज ये है, कैन आई मेक इट ग्लो? लेट्स फाइंड आउट। लाइट पेंट करना ट्रिकी होता है। ज़्यादा वाइट ऐड करो तो फ्लैट लगता है, कम करो तो डल। हर स्ट्रोक डिसाइड करता है ग्लो जिंदा रहेगा या नहीं। पहले बेस टोन वार्म येलो, थोड़ा ऑरेंज, फिर मेटालिक रिफ्लेक्शन के लिए वाइट हाइलाइट्स। स्लोली द दिया स्टार्टेड ब्रीदिंग। मैं चाहती थी पेंटिंग से वो वार्मथ आए जो रियल फ्लेम से फील होती है। कभी कभी लगता था बस स्ट्रोक और सब खत्म। और जब मैंने फाइनल हाईलाइट ऐड किए, मुझे लगा लाइट कैनवस से बाहर आ गई। ये पेंटिंग सिर्फ एक स्टिल लाइफ नहीं बनी, एक फीलिंग बन गई। कभी कभी मुझे लगता है पेंटिंग सिर्फ कलर्स की गेम नहीं, पेशेंस और पीस का भी टेस्ट होता है। इस ग्लो को कैप्चर करते हुए मुझे लगा जैसे मैं खुद थोड़ा काम हो गई। If this painting made you feel even a little warm or peaceful, leave a like and subscribe. अगली बार मैं ट्राई करूँगी पेंटिंग फायर itself. I tried to paint something that can't be painted, light. And I only had one evening before Diwali to finish it. Let's see if I can capture this glow before Diya burns out. The trick was layering warm tones with white highlights. Every brush stroke made the glow stronger, and then I messed up the shadow. But we don't give up. Artists fix everything with patience. And when I added the final white highlight, it felt like the light was alive. This Diwali, I didn't just light my home, I lit my art. And honestly, this might be my most peaceful painting yet. Here's the challenge. Painting light is hard. It's not about color, it's about illusion. One wrong highlight and it's gone.
And here it is, the glow captured on canvas. No filters, no tricks, just light, brush, and patience. Light isn't just what we see, it's what we feel. And if this painting made you feel even a little calm, that's my Diwali gift to you. Subscribe for more art that glows from the heart.